एग्जीक्यूटिंग अ C++ प्रोग्राम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। लिखने का क्या पैटर्न है C++ कोड को, उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, a C++ program also contains other components such as the header file and the main function. ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को छोड़ के C++ में मेन एक हेडर फाइल भी होती है और मेन फंक्शन भी होता है। ये दोनों भी मेन होते हैं, वो देखेंगे इसमें कैसे यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ C++ प्रोग्राम। फर्स्ट इज द IOStream header file. The first statement in a typical C++ program will be #include IOStream.h. हम जब भी C++ का कोड लिखेंगे सबसे पहले हमारी जो लाइन होगी हर कोड में वो यही होगी #include IOStream.h. This statement is called a preprocessor directive. Preprocessor directives are the statements that are processed before the program is compiled. Compilation is the process of converting program code to object code. The software that handles the preprocessor directives is called a preprocessor. The preprocessor directives shown above include the code of the header file IOStream.h into the program. The header file contains definition of functions, class, and predefined objects like cout and scene. cout और scene हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूँ उसको ब्रीफ में। cout हम यूज़ करते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए C++ कोड में, और सीन यूज़ करते हैं हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए। The header files are in the include folder. Incidentally, header file name have traditionally had the extension .h. However, this is not a requirement for the C++ standards. Note that the statement #include IOStream.h does not terminate with a semicolon. इसमें कोई semicolon नहीं लगता लास्ट में। Next is the main function. The main function is mandatory in a C++ program. The program execution always starts from the main function. Example #include IOStream.h. IOStream जो पहली लाइन रहेगी हमारी, फिर हमने int main मेथड बनाया int main, फिर हमने कोई भी C++ का कोड लिख दिया इसके अंदर, रिटर्न 0 कर दिया। When the main function completes execution, it needs to notify the operating system about its completion. This is the reason why the last statement in main is return 0. रिटर्न 0 हम बेसिकली लिखते हैं ताकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाए कि हमारा प्रोग्राम फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया बिना किसी एरर के, इसलिए हम लास्ट में रिटर्न 0 लिखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर द नंबर 0 that is returned to it to imply that the program has completed execution without any errors. If any number other than 0 is returned to the operating system, it implies that some error has occurred. The main function should create the objects of the appropriate classes and invoke member functions. Consider the following code snippet. #include IOStream, class बनाई class car, float price, member function are declared and defined after the public access specifier. फिर हमने पब्लिक लिखा, फिर हमने मेथड बनाया void accept price नाम से, इसमें हमने लिखा cout एंटरप्राइज, ये हमने प्रिंट करवाया एंटरप्राइज, और सीन करा प्राइस, जो यूज़र इनपुट डालेगा वो प्राइस होगी हमारी। उसके बाद एक और मेथड बनाया हमने void honk नाम से, फिर हमने cout यूज़ करा प्रिंट करवाने के लिए, बीप प्रिंट होगा। फिर हमने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में हमने बनाया कार फोर्ड का ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट नेम्ड फोर्ड ऑफ द टाइप कार इज क्रिएटेड, for.accept price, invoke the member function accept price जो मेथड है उसे इन्वोक करेगा, फिर for honk invokes the member function honk, return 0. In the above example, the code for object creating and invoking member function is written inside the main function. You will learn about more access specifier in subsequent videos. Access specifier होते हैं public, private और protected। ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये ब्रीफ में मैंने बता दिया कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होते हैं, यानी कि कोई किसी अगर मेथड में हमें कोई वो लगाना है, रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि उसे हम ही देख सकें या हम ही एक्सेस कर सकें और कोई एक्सेस ना कर सके तो उसे प्राइवेट कर देते हैं, या पब्लिक करना हो कि कोई भी उसे एक्सेस कर सके तो उसे पब्लिक कर देते हैं। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे।
Note that the program given above also contains comment entries within the slash star and star slash symbols and after the slash slash symbol. Comment entries are note that a programmer writes anywhere in the code so that any other programmer reading the code will understand it better. जैसे आपने ऊपर देखा होगा ये फॉर होंक के आगे जो मैंने स्लैश स्लैश करके इनवॉक्स द मेंबर फंक्शन होंक लिखा है, ये मैंने इसके आगे कमेंट डाला है कि मैंने फॉर डॉट होंक क्यों लिखा है। स्लैश स्लैश इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके आगे कमेंट डाल सके। जैसे अगर मैंने तो ये लिखा है, कोई और अगर कोडर पढ़ रहा हो तो उसे पता लग जाए कि मैंने फॉर होंक क्यों लिखा है, तो ऐसे स्लैश स्लैश डाल के मैं कोई भी मैसेज या कोई भी कमेंट वहाँ पर लिख सकता हूँ। कोडर के लिए होता है बेसिकली ये, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कंपाइलर हमारा कंपाइल करता है उसके लिए मायने नहीं रखता, वो इसे रन भी नहीं करता स्लैश स्लैश के आगे। तो आगे देखते हैं। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट एंट्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली दे नेवर अपीयर इन द एग्जीक्यूटेबल कोड। If a comment entry spans more than one line, it has to be enclosed within slash star and star slash symbol. The slash slash symbol treats the rest of the code line as a comment. The next is displaying formatted output. You must ensure that the any output generated or displayed by your program is easily readable and comprehensible by the user. This requires you to format the output that is generated. C++ provides you with certain manipulators that can be used to format the output to be displayed on the screen. One of the most commonly used manipulators provided by C++ is the setW manipulator. The setW manipulator is used to set the width of the field that is to be displayed on the screen. The required width is provided as a parameter to the manipulator. Consider the following statement. Cout setW10 Brian. In the preceding statement, the width of the text Brian is 5. Since the setW manipulator is setting the width to 10th, therefore 5 additional characters will be prefixed to the original 5 character, and then the output will be displayed on the screen. The characters that are prefixed to the original characters are whitespace characters. The output generated by the preceding statement that include the setW10 manipulator will be dash 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 Brian. In the preceding output, the dash dash character prefixed before the text Brian represent white space. ये white space है जो dash dash है. Similarly, if you will display the text Brian instead of Brian and apply the same width of 10 to the next text, the output will be prefixed with 6 white space in addition to the 4 characters of Brian. Note that to use the setW manipulator, you must include the manip.h header file in your program. The next is introduction function. Functions are the building blocks of C++ program. When programs become large, a single list of instructions becomes difficult to understand. For this reason, functions are adapted. A function groups a number of program statements into a single unit. A function has a clearly defined purpose and a clearly defined interface to other functions in the program. A group of functions together form a larger entity called a module. Thus, this approach to programming, where a program is broken down into smaller modules, is known as modular programming. What is modular programming? Thus, this approach to programming, where a program is broken down into smaller modules, is known as modular programming. Another reason for using function is to reduce the program size. Any sequence of instructions that is repeated in a program can be grouped together to form a function. The function code is stored in only one place in the memory. The following program illustrates the use of a function. / this is the comment. This program uses a function to calculate the sum of two numbers. दो नंबर को सम करने के लिए है ये प्रोग्राम. #include #stream.h कॉमन है ये तो हर उसमें प्रोग्राम में. फिर हमने मेथड बनाया void add फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. फिर void main बनाया हमने. cout करा calling function add मेथड a call to the function add.
सी आउट और रिटर्न फ्रॉम ऐड फंक्शन एंडल। एंडल हम यूज़ करते हैं लाइन को एंड करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अगर लास्ट में हमने एंडल लिखा है तो हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। / व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन द कमांड इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। सेमीकोलन लगता है इसमें। / फंक्शन डेफिनेशन फॉर ऐड वॉइड ऐड इंट 3 वेरिएबल है, इंट आई नम 1 आई नम 2 आई नम 3। सी आउट करा इनपुट 2 नंबर्स, यूज़र इनपुट डालेगा। पहले आई नम 1 सीन करके हमने आई नम 1 को इनपुट लिया, फिर हमने आई नम 2 का इनपुट लिया सीन करके, फिर हमने आई नम 3 इक्वल्स टू आई नम 1 प्लस आई नम 2 कर दिया। प्रिंट करवा दिया हमने द सम ऑफ 2 नंबर इज आई नम 3 को, जो उसमें नंबर प्लस होके आएगा आई नम 1 आई नम 2 को करके, वो हमने प्रिंट करवा दिया। इन द अबव प्रोग्राम द ऐड फंक्शन इज इन्वोक्ड फ्रॉम मेन फंक्शन से। द कंट्रोल पासेस टू द ऐड फंक्शन एंड द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। The control then returns to main and the remaining code is executed. The sample output of the program that adds 2 number is as follows. Calling function add input 2 numbers, ये 2 नंबर डाले होंगे यूज़र ने 10 और 20, ये प्रिंट हो गया। The sum of 2 number is 30. Return from add function. In the given program, the main function which invokes the add function is called the calling function, and the add function is the called function. Then other is function prototyping। क्या होता है? Just as any variable is declared in a program before it is used, it is necessary to declare or prototype a function to inform the compiler that the function will be referenced at a later point in the program. In the given program, the statement void add is a function declaration or prototype. The next is defining a function. The function definition contains the code for the function. The function definition for add method is the given program is function definition for add void add। 3 variables are declared, int I num 1 I num 2 I num 3। प्रिंट करवाया हमने इनपुट 2 नंबर्स, फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया सीन करके आई नम 1 आई नम 2, फिर हमने आई नम 3 इक्वल्स टू आई नम 1 प्लस आई नम 2 कर दिया, फिर वही हमने प्रिंट करवा दिया दोनों को प्लस करके आई नम 3। A function declaration can be avoided if the function definition appears before the first call to the function. The given program for adding 2 numbers can be modified to avoid function declaration, as this program uses a function to add 2 numbers. Hash include string.h कॉमन है हर प्रोग्राम में। void add, फिर हमने 3 वेरिएबल लिए सेम, int आई नम 1 आई नम 2 आई नम 3, प्रिंट करवाया इनपुट 2 नंबर्स, फिर यूज़र इनपुट डालेगा, पहले आई नम 1 फिर आई नम 2, फिर हमने दोनों को प्लस करके आई नम 3 में डाल दिया, फिर हमने प्रिंट करवा दिया आई नम 3 को। void main लिखा हमने, फिर सी आउट प्रिंट करवाया हमने कॉलिंग फंक्शन ऐड अ कॉल टू द फंक्शन ऐड। सी आउट करवाया रिटर्न फ्रॉम ऐड फंक्शन हैंडल। देन द नेक्स्ट इज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन इज आर द डाटा दैट द फंक्शन रिसीव्स व्हेन इन्वोक्ड फ्रॉम another function. It is not always necessary for a function to have arguments. The add function did not contain any arguments. Then other is specifying argument data types. If you are creating a function that accepts arguments, you must specify that the data type of the data type of the argument in the function declaration. For example, if you are creating a function named add that accepts 2 integer arguments, you can declare the function as void add int int। जब हमने int int अंदर ब्रैकेट में लिखा है void add फंक्शन में, ये पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। ये अंदर जो int int है ये पैरामीटर्स है। You need to ensure that the function definition also includes the same argument types. For example, the add function can be defined as void add int argument 1 int argument 2, specifying the argument types as int। इसे इन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, इन्हें पैरामीटर्स भी कहते हैं। To invoke the add function, you will pass 2 integer values to the function as shown in the following statement: add 10, 15. Note that the function call does not require you to provide the type specifier for the arguments being passed. The add function above that adds 2 numbers can be modified to accept 2 arguments as shown in the following program, as include #include iostream.h void add int I variable 1 int I variable 2 function containing 2 arguments.
फिर हमने इंट आई वेरिएबल 3 इक्वल्स टू आई वेर 1 प्लस आई वेर 2 कर दिया। फिर हमने प्रिंट करवाया द सम ऑफ टू नंबर इज आई वेर 3 को प्रिंट करवा दिया। वॉइड मेन लिखा हमने, वॉइड मेन लिखा हमने, इसमें हमने इंट आई नम 1 आई नम 2 लिखा, सी आउट इनपुट 2 नंबर्स करा, प्रिंट करवाया हमने। फिर यूज़र ने इनपुट डाला सीन करके आई नम 1 आई नम 2 का हमने इनपुट लिया। फिर हमने ऐड आई नम 1 कॉमा आई नम 2 कर दिया, पासिंग 2 वैल्यूज़ टू द फंक्शन ऐड। हमने वैल्यू को पास कर दिया आर्ग्यूमेंट्स में। नेक्स्ट इज रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। When a function completes its execution, it can return a single value to the calling program, which can be trapped when the calling function needs to the result of the called function. The following program illustrates a function that returns a value. This program uses the functions to add two numbers and return the sum. Through the calling program hash include string.h int add int the function returns a value of type int void main int isum i_var1 i_var2। ये सब सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस बता रहे हैं इसमें सारे प्रोग्राम्स के। सी आउट लिखा हमने एंटर टू वेरिएबल्स, फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया i_var1 i_var2, फिर हमने isum इक्वल्स टू ऐड i_var1 i_var2 कर दिया, हमने वैल्यू पास कर दी, सी आउट करा हमने isum को। फिर इंट ऐड लिखा इंट आई नम 1 आई नम 2, रिटर्न करा हमने आई नम 1 प्लस आई नम 2। When a function returns a value, the data type of the value must be specified before the function name. In the preceding program, the type int is placed before the add function. Functions that return no value have the return type specified as void. The statement isum equals to add i_var1 i_var2 cause the variable isum to be assigned the value returned by the function add. The sample output of the preceding program is as follow: enter two number, ये यूज़र ने इनपुट डाला 23 और 37, द सम ऑफ टू नंबर इज 60, ये प्रिंट हो गया आगे। देन द नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। C++ allows a function to assign a default value to a parameter when no argument corresponding to that parameter is specified in the call to that function. अब हमने अगर कोई वैल्यू पास नहीं करी पैरामीटर में तो फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी है C++ में, वो देखते हैं वो क्या है। अब जैसे a function that assigns default argument is illustrated in the following code segment: int add int inum1 equals to 10 int inum2 equals to 20। फिर हमने रिटर्न करवाया inum1 plus inum2 in the above code segment. If the add function is invoked without any arguments, then the default value of 10 and 20 is assigned to inum1 and inum2 respectively. If values are passed to the function, then corresponding values are assigned to inum1 and inum2. Then the next is constant arguments. There may be situations where you do not want the function to modify the arguments that you pass to it. In such a situation, you can ensure that the argument that is passed to the function is a constant. To make an argument as constant, you need to use the const keyword. For example, if you want that the integer arguments accepted by the add function should be constant, you can modify the declaration as int add const int I variable 1 const int I variable 2। बस const लगाना है variables के आगे। Then the next is creating objects. A class declaration does not reserve memory at the time of declaration. Memory is allocated when an instance of the class is created. An instance of a class is called an object. For example, in the following statement, int inum1 inum2 inum3, inum1 inum2 and inum3 are three variables of type int. All the objects share the same copy of the member functions but maintain a separate copy of the member variables. In the previous video chapter, you learned to declare a class named car. Now to create an object named Ford of the type car, you will use the following code: car Ford. The member function of the class are accessed through an object of the class using the dot operator. Consider the following example: for.honk. In the above example, the object name and the dot operator is used to access the member
function honk. Then the next is compiling, linking, and executing the program. The compiler, as discussed earlier, is software that translates a program written in a language like C++ into object code that is run by the machine and can run by the machine. The object code of the program is the file containing the translated program. The suffix given to the C++ source files will depend on the compiler in use. Unix-based compiler commonly use a suffix of .cc or .c or .cxs. DOS/Windows-based compiler typically use the suffix .cc, .cxx, or .cpp. After compiling, the object code is linked with libraries. Libraries are a collection of executable pieces of code that you can reuse in your program. A C++ library contains object code snippets called functions for tasks like drawing a line on the screen and displaying a character. These tasks are generally done by most programs, hence they have been put together in common library files, which every programmer can use. Various software corporations have added libraries and are selling their implementations of the C++ language. Hence, we have DJGPP, Boldend C++, Symantec C++, Metrowork, CodeWarrior, IBM, Visual Edge, and KAI C++. These implementations provide integrated development environments, IDEs. An IDE is a software that allows you to write a program, check it for errors, and translate it into machine language. These tasks are performed by using a built-in editor, debugger, and compiler respectively. An IDE also allows you to link and run the compiled program. In this video, you will use code blocks for developing applications. I personally use code blocks for C++ and C language, and this is very useful. You need to perform the following steps to compile and execute a C++ program by using the code block compiler. Let's see. अब हम देखेंगे कि कोड ब्लॉक्स में कैसे C++ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे. Then file, new, project. इसमें console एप्लीकेशन, इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं हम. C और C++ दोनों के प्रोग्राम हो सकते हैं इसमें. मैं C++ का करूँगा तो इस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट. प्रोजेक्ट का नाम, नेक्स्ट. कंपाइलर है ये, फिनिश. इस पे जाएंगे. सोर्सेस, मेन CPP. ये आ गया. ये प्रोग्राम लिखा हुआ है पहले से, इसमें एडिट करेंगे हम. इसको रन कराना हो तो बिल्ड एंड रन. ये हेलो वर्ल्ड रन हो के आ जाएगा. ये आ गया हेलो वर्ल्ड. जो एडिटिंग करनी है इसी में एडिटिंग करनी है हमें. Note: in the code blocks IDE, IOStream and using namespace std are given by default included, so you can run all your program without including any other header file. Identifying errors. Before starting the compilation process, you must ensure that the program is error-free.
An erroneous program will not compile. Some of the common types of errors are categorized as: first is syntax error, second is semantics error, third is logical error, fourth is type errors, fifth is runtime errors. This is the sum of error types in C++. First, syntax errors. Syntax errors to the rules that govern the structuring of statements in a language. You need to ensure that the statements that you are writing in your program are syntactically correct. Consider the following snippet: void main cout hello world. अब इसमें हमने cout के आगे जो हम hello world दिखाया इसके आगे हमें सेमीकोलन लगाना था, लेकिन यहाँ पर लगा दिया हमने डॉट। तो ये सिंटैक्स में एरर है, syntactically एरर आ गया है। The preceding snippet when executed in the compiler will result in an error. This is because each statement in C++ must terminate with a semicolon, which has not been done in the preceding code snippet. If in a program you terminate a statement with a symbol other than the semicolon, the program will cause a syntax error. जैसे हमने सेमीकोलन की जगह वहाँ पर डॉट का यूज़ कर दिया था ना, तो वो एरर दे देगा और वो सिंटैक्स एरर होगा हमारा। सेकंड है semantic error. Semantic errors are those that are caused because of statements that are not meaningful. Semantic refers to the meaning of a statement. The statement that you write may be syntactically correct, but if the meaning of the statement is not correct, a semantic error will be raised by the compiler. For example, you always place the expression to be evaluated on the right hand side of the assignment operator, and the variable to which the result is assigned is placed on the left hand side of the assignment operator. However, if you interchange the placement of the expression and the variable, a semantic error will be raised. This is shown in the following example. A plus b equals to sum. The preceding statement will result in a semantic error and the compiler will not execute. अब इसमें a plus b equals to sum, आप सोच रहे होंगे कि ये एरर क्यों है। तो इसमें एरर इसलिए है क्योंकि इसमें सम जो है वो इक्वल्स टू के पहले आना चाहिए था और a प्लस बी आना चाहिए था हमारे राइट साइड में, इक्वल्स टू के राइट साइड में। क्यों? क्योंकि जो ये कोड होते हैं इनमें बेसिकली क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो राइट टू लेफ़्ट जाती है। यानी कि अगर राइट में कोई वेरिएबल है और यानी कि राइट में अगर कोई वेरिएबल है, बी में कोई वेरिएबल है और हमें बी की वेरिएबल को ए में पास करना है, तो हमें बी को ये इक्वल्स टू के राइट साइड में लिखना पड़ेगा और जो ए है जिसमें हमें डालनी है बी की वैल्यू उसको हमें लेफ़्ट साइड में लिखना पड़ेगा। ऐसे वैल्यू पास होती है राइट टू लेफ़्ट, इसलिए इसमें ए प्लस बी इक्वल्स टू सम एरर दे देगा। ए प्लस बी इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड आना चाहिए था और सम जो आना चाहिए था वो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए था इक्वल्स टू के। The program even when the syntax of using variables, adding, assigning and terminating is correct. Then next is logical errors. Logical errors are caused by statements that generated undesirable or unpredicted outputs. For example, if you have to calculate the average score of 4 subjects but divided the sum of 4 subjects by 3, then this will constitute as a logical error, as it will generate an undesirable result. Next is type errors. Type errors are caused when you pass a type of value that is different than the one that is expected by the program. For example, if you try to store an integer value in a string variable, a type error will be raised. Then next is runtime errors. Runtime errors occurs while the program is executing. Such errors are a result of certain illegal operations. For example, during the program, if an expression causes a value to be divided by 0, a runtime error will occur. Further, if during the execution of a program there is insufficient memory, a runtime error is raised. Similarly, a runtime error will be raised if the program tries to open a file that is non-existent.